Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we will discuss the topic ionization enthalpy of chapter 3 classification of elements and periodicity and properties of class plus 1. So first of all, what is ionization energy or ionization enthalpy? It is the minimum amount of energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. It means we are having single gaseous atom of any element and we are going to remove one electron from the outermost shell of that atom. So the amount of energy required, the minimum amount of energy required, this is called the ionization enthalpy, or it is also called the ionization energy. It is represented by या तो simply IE, otherwise delta HI. This is the symbol of ionization energy or ionization enthalpy. For example, we are having M gaseous atom. Okay? We are going to remove one electron. So after removing one electron, M gases will convert into the M positive gases. So it means we have removed first electron. So in this case, the energy required is called the IE1 or delta HI1. So हमने यहाँ outermost shell से one electron निकाला है, तो यहाँ जो energy required है, that is called the first ionization energy, और it is also called the delta HI1. Now अब M किस में कन्वर्ट हो गया? M प्लस गैसेस में. अब हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं. Now this will convert into M plus 2 gases. So again energy required to remove this electron. So this is called the IE2 or delta HI2. This is called the second ionization energy. अब M plus 2 गैसेस है. अब हमने इसके आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? M plus 3 gases. It means this is the third number of electron which are going to be removed from the outermost shell. So अब एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, that is called the IE3 or delta HI3. This is called the third ionization energy. So I1, I2, I3, these all are called the successive ionization energies. Successive ionization enthalpies बोलते हैं या successive ionization energies. अब for example, we are having isolated gaseous atom of sodium element, and we know the electron configuration of sodium is 281. As you remove one electron from the outermost shell of this atom, then Na will convert into the Na positive gases. Configuration will be 28. This is called first ionization energy or delta HI1 of sodium element. Now Na plus gases जो हैं, now we are going to remove one electron from the Na plus gases, then we see its configuration will convert into the 28227 and Na plus will convert into the Na plus 2. That is called the IE2 or delta HI2 second ionization energy. Now अब हमारे पास Na plus 2 है. अब हमने फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला आउटरमोस्ट शेल से, Na plus 3 कन्वर्ट हो जाएगा 2 6. That is called the third ionization energy और delta HI3. अब हमें आयनाइजेशन की फैक्टर्स के बारे में और वेरिएशंस के बारे में स्टडी करना है, तो ध्यान दीजिएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है.
very important point. Ionization energy is directly proportional to strength of forces of attraction between nucleus and electrons present in outermost shell. न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही क्या है एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी. किस लिए? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम. इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी. और ये फोर्सेस वीक होंगी तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी के अंदर ये पॉइंट ही चलेगा. So ionization energy is directly proportional to strength of forces of attraction between nucleus and the electrons present in outermost shell. Now, next topic is factors which affect ionization energy. Factors which affect ionization enthalpy of any element. First factor is atomic radius. We know what is atomic radius. It is the distance between the center of nucleus to the outermost shell containing electron. This distance is called the atomic radius. And as the atomic radius will increase, it means the distance between center of nucleus and outermost shell, their distance will increase. And we know the distance and forces, they are inversely proportional. It means if the distance between center of nucleus and outermost shell will increase, then the forces of attraction between nucleus and electron present in outermost shell, these forces will become weaker. ये forces कैसे हो जाएंगी? Weak. और यदि forces weak होंगी, the less amount of energy is required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. It means ionization energy will decrease. So atomic radius बढ़ने से ionization energy क्या हुई है? Decrease. It means ionization energy atomic radius से क्या है? Inversely proportional. So ionization energy is inversely proportional to the atomic radius. Second factor. Second factor is nuclear charge. So what do you mean by nuclear charge? Nuclear charge means the positive charge present on the nucleus. So if the nuclear charge will increase, then the forces of attraction between nucleus and electron present in outermost shell, these forces will become stronger and stronger. And the forces strong होंगे, then amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom, that energy will increase. It means ionization energy will increase. So nuclear charge बढ़ने से ionization energy क्या हुई है? Increase. So ionization energy is directly proportional to nuclear charge. Third factor. Third factor is stable configuration. In the chapter 2, we have studied that there are three types of configuration. One is fully filled, second is the partially filled, third is the exactly half-full configuration. And we know fully filled and exactly half-full configuration, they are more stable than the partially filled electron configuration. So it means if an element is having the stable configuration, then removal of an electron from the outermost shell of that isolated gaseous atom will be difficult. And if the process is difficult, then we have to supply more amount of energy. It means ionization energy क्या होगा? Increase कर जाएगी. So ionization energy is directly proportional to stable configuration. It means जिनकी configuration fully filled है, उनकी ionization energy exactly half filled और partially filled दोनों से ही ज्यादा है, और exactly half filled की ionization energy partially filled से ज्यादा है. Fourth factor is known as the shielding effect. So what do you mean by shielding effect? The repulsion
caused by inner shell electrons on the outermost shell electrons is called shielding effect. It is also called the screening effect. And it is represented by sigma. So what is shielding effect? It is the repulsion caused by inner shell electrons on the outermost shell electrons. This is called the shield effect. अब इसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं. For example, I am having lithium. Atomic number is 3 and configuration is 2,1. And second is the sodium. Atomic number 11. Configuration is 281. So if we draw the electronic structure of lithium, then in the center there is nucleus. There are two shells. The first shell is having the 2 electron and second shell is having 1 electron. In case of sodium, in the center there is nucleus. Now there are 3 shells. The first shell is having the 2 electron. Second one is having 8. Third one is having 1. Now, what do you observe? What is inner shell electron? What is the outermost shell electron? This is called the outermost shell. And now in this case, this is the inner shell. अब यहां ये outermost shell है और दोनों ही, ये शेल भी और ये शेल भी, these two are the inner shells. अब होगा क्या? The inner shell electrons will repel the outermost shell electrons. In case of lithium, there are 2 electrons in the inner shell. So यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन outermost shell के एक इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे. और इन केस ऑफ सोडियम, टोटल 2 इनर शेल हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन. तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन outermost shell के इस एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे ड्यू टू द सेम ड्यू टू द सिमिलर चार्जेस, नेगेटिव चार्ज होने के, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल लिया जाता. सो रिपल्शन ज्यादा कहां होगा? रिपल्शन विल बी मोर इन केस ऑफ सोडियम. एंड रिपल्शन जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड outermost shell, this distance will continuously increase and this is called the atomic radius. ये distance है कौन सा? This is called the atomic radius. So it means atomic radius will increase. और आपने फर्स्ट फैक्ट में पढ़ा है कि आयनिक एनर्जी atomic radius से क्या है? इनवर्सली. बिकॉज atomic radius बढ़ेगा तो क्या होगा? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट outermost shell, these forces will become weaker and less amount of energy is required. So it means repulsion बढ़ना, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या हो रहा है? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसी हो रही है? वीक, और एनर्जी क्या है? लेस रिक्वायर्ड है. सो इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी is inversely proportional to the screening effect or shielding effect. Fifth factor. Fifth factor is the penetration effect. So what do you mean by penetration effect? It is the closeness of any atomic orbital towards a nucleus. The closeness of any atomic orbital towards the nucleus, this is called the penetration effect. कि किसी एटॉमिक ऑर्बिटल की न्यूक्लियस के प्रति क्लोजनेस कितनी ज्यादा है.
इसका एक ऑर्डर है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट? Order of penetration effect of atomic orbitals of an shell. Suppose कीजिए we are having 4 atomic orbitals SPDF या सब शेल्स पे कह सकते हैं 4 सब शेल SPDF, ठीक है, of any shell. Then what is the order of penetration effect? S greater than P greater than D greater than F. It means S atomic orbital का penetration effect P से जाता है, P का D से, D का F से. कंडीशन क्या है कि शेल सेम होना चाहिए. इट मींस शेल सेम का मतलब क्या है? हम ये नहीं कर सकते कि 2s और 3p का कंपैरिजन करेंगे. नो, 2 है तो 2 के साथ कंपैरिजन, 3 है तो 3 के साथ कंपैरिजन, नहीं कि 2s और 2p का कंपैरिजन होगा, 3s 3p का कंपैरिजन होगा, इस तरह से. ठीक है. सो हमें ये देखना है कि शेल जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए, तब कंपैरिजन देखना है. द s atomic orbital is having more penetration effect than the p is having more than d is having more than f. सो इससे होगा क्या? इट मींस किसी भी शेल का एस एटॉमिक ऑर्बिटल वाला यानी कि एस सब शेल है न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है. अब जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो क्या होगा? जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के प्रति कैसे होगी? स्ट्रॉन्ग होगी. सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost shell of that atomic orbital will be stronger. और दी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, देन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज. तो क्लोजनेस बढ़ना मींस पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ने से क्या हो रहा है? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो आयनाइजेशन एनर्जी of any element is directly proportional to the penetration effect. Next factor, next is the effective nuclear charge. That is Z star. अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या? Z star इक्वल टू Z माइनस सिग्मा. तो Z क्या है? दिस इज न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट. सो Z स्टार इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट. So as the effective nuclear charge will increase, जैसे जैसे बढ़ेगा, then what will happen? The forces of attraction between nucleus and electrons present outermost shell, these forces will become stronger. ये forces strong हो जाएंगी, forces strong होंगी, then the removal of electron from outermost shell of an isolated gaseous atom, that will become difficult and more amount of energy is required. So therefore, ionization energy is directly proportional to effective nuclear charge. So these all are the factors on which ionization energy depends. Now our next topic is variation of ionization energy and some important related questions to an ionization energy. So first is variation of ionization energy. फर्स्ट है डाउन द ग्रुप. आपने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा. इनकेस यदि आपको एटॉमिक रेडियस का पॉइंट आपने अच्छे से नहीं देखा है तो उस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा. कैसे? अब जरा देखिएगा. वी नो एटॉमिक रेडियस में आपने पढ़ा एज यू मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल विल इंक्रीज. नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल, दैट डिस्टेंस विल इंक्रीज. और उस डिस्टेंस को बढ़ने से क्या होगा? द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, दीज फोर्सेज विल बिकम वीकर. यदि वो फोर्सेज वीक होंगी, देन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल. ठीक है.
और यदि एनर्जी लेस रिक्वायर्ड है इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। डिक्रीज, ये नीचे एरो का वाला डिक्रीज। सेकंड है अक्रॉस द पीरियड। We know as we move across the period from left to right, the number of shell remains same, but atomic number, proton as well as nuclear charge will increase. और आप जानते हैं यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होगा? द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, दीज फोर्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर। और यदि फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी तो क्या होगा? द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी विल जनरली इंक्रीज, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। सो दिस इज अबाउट द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पर एक क्वेश्चन और भी आता है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज of any element generally follows the order. क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं? IE3 greater than IE2 greater than IE1. Even third ionization energy is generally more than the second ionization energy and second is more than that of the first ionization energy. अब हम जानते हैं फर्स्ट ionization energy मीन रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड मीन सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड मीन थर्ड इलेक्ट्रॉन। And we know as the number of electrons are being removed one by one, the nuclear charge remains same. क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज सेम है, Na का भी, Na प्लस का भी, Na प्लस 2 का भी, Na प्लस 3 का भी। सो एज वी विल रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, या ये कहेंगे एज द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड वन बाय वन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज बट न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम। And due to the decrease in the number of electrons, the forces of attraction between nucleus and electron present in the outermost shell will become more and more with the removal of every electron. और यदि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएगी तो क्या होगा? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी विल जनरली इंक्रीज। सो देयरफॉर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन द सेकंड एंड सेकंड इज मोर देन द फर्स्ट एंड इट जनरली फॉलोज द ऑर्डर। कहीं कहीं पर कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे, वो आपको भी पता चल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन है। नाउ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन is more than that of oxygen। कि नाइट्रोजन की फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा क्यों है? अब यदि वैसे देखें तो हमारे पास हमने पीरियड पढ़ा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, एंड दिस इज ए पीरियड। और अभी आपने पढ़ा वेरिएशन में, एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the number of shell remains same but atomic number, proton as well as nuclear charge will increase. Due to this, the forces of attraction between nucleus and electron present in the outermost shell, these forces will become stronger and removal of electron will become difficult and ionization energy will increase. So होना क्या चाहिए? ऑक्सीजन की ionization energy नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ionization of नाइट्रोजन is more than that of oxygen। अब जरा देखिएगा ऐसे क्या हुआ है। So we know atomic number of nitrogen is 7 and of oxygen it is 8. Ground state electron configuration is 1s2, 2s2, 2p3 and oxygen में क्या है? 1s2, 2s2, 2p4। अब हम आउटरमोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं इनको बॉक्सेस से शो करें। So this is
2s2, 2p3, यहां पर 2s2, सॉरी 2p4. Then what you observe? In case of nitrogen, it is having the exactly half-filled electron configuration because there are total 3 electrons in the 2p atomic orbitals and each atomic orbital is having the 1 electron. So this is the half-filled electron configuration. In case of nitrogen, exactly half-filled electron configuration is present, and in case of oxygen, it is having the partially filled electron configuration. And we know exactly half-filled electron configuration is more stable than the partially filled electron configuration. So more amount of energy is required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom in case of nitrogen, and therefore ionization energy of first ionization energy of nitrogen is more than that of oxygen. So first ionization energy of nitrogen is more than first ionization energy of oxygen. This is our first question. Second question. Second question is why first ionization of beryllium is more than that of boron. कि बेरिलियम की फर्स्ट आयनिक एनर्जी बोरोन की फर्स्ट आयनिक एनर्जी से ज्यादा क्यों है? अब जरा चेक कीजिएगा, देखिए वही सेम केस है, बेरिलियम, बोरोन, आइटम नंबर 4, 5, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कन्वर्शन 1s2 2s2, यहां पर क्या है 1s2 2s2 2p1. अब यहां ये आउट ऑफ शेल, यहां ये दोनों, अब बॉक्सेस देखते हैं तो हमारे पास ये 1s है, ये 2s है, 1s2 2s2, यहां क्या है 1s2 2s2 2p1. So what do you observe? In case of beryllium, fully filled electron configuration, while in case of boron, it is having the partially filled electron configuration, and we know fully filled electron configuration is more stable than the partially filled electron configuration. That's why first resonance of beryllium is more than that of boron. And there is one another reason. What do you observe? In case of beryllium, if we have to remove 1 electron, then it is to be removed from the 2s atomic orbital. While in case of boron, it is to be removed from the 2p. Now you see that 2, 2, it means shell is same. So in case of beryllium, the electron is removed from the s, and in case of boron, it is to be removed from p. And we know the 2s atomic orbital is having more penetration effect than the 2p atomic orbital. Penetration effect ज्यादा, it means 2s atomic orbital में जो इलेक्ट्रॉन हैं they are more closer to the nucleus than 2p. और यदि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज हैं तो क्या होगा? The forces of attraction between nucleus and the electron present in the outermost shell, these are stronger. ठीक है, in case of beryllium, और the forces strong है, then more amount of energy is required to remove one electron from the outermost shell in case of beryllium. ठीक है, of an isolated gaseous atom in case of beryllium, and therefore there are two reasons that the ionization energy of beryllium is more than that of boron. So first ionization energy of beryllium is more than first ionization energy of boron. Now third question. Our third question is why noble gases or group 18 elements have highest value of ionization energies.
कि नोबल गैसेस या ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, दे हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फास्ट एलाइजेशन एनर्जी. कैसे? वी नो देयर आर टोटल 6 नोबल गैसेस: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. And if you observe the electron configuration, then in case of helium, it is having the ns2 configuration, while neon, argon, krypton, xenon, radon, they are having the ns2 np6 as the general outermost shell electron configuration. And these two type of configurations are the fully filled electron configuration. It means all the noble gases have fully filled electron configuration, and this type of electron configuration is the most stable electron configuration. So removal of electron from the outermost shell will be most difficult in case of noble gases. ठीक है? Removal of electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom will be more difficult in case of noble gases, and it means more amount of energy is required, and that's why first ionization energy of noble gases will be highest. Next question, and this is the last question related to the ionization energy. Question number 4. Very important aspect. Why first ionization energy of magnesium is more than that of sodium, while second ionization of sodium is more than that of magnesium. कि फर्स्ट ionization एनर्जी क्या है, वो तो मैग्नीशियम की ज्यादा है सोडियम से, और सेकेंड ionization एनर्जी सोडियम की ज्यादा है मैग्नीशियम से. ऐसा क्यों है? अब जरा देखिएगा. सबसे पहले ये है सोडियम, ये है मैग्नीशियम. First ionization energy mean we have to remove first electron. So whenever we remove first electron, then Na gases will convert into the Na positive gases, and the configuration of Na gases is 281, 28. या configuration wise देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, और अब ये क्या बन गया है 1s2, 2s2, 2p6. ठीक है? वाइल मैग्नीशियम का केस देखते हैं. atomic number is of magnesium is 12. Mg gases, 1 electron remove किया है, Mg plus gases. Configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और वो 282 तो है ही है, और ये बन के क्या है 281. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Whenever we check the electron position of sodium as well as magnesium, then whatever we observe, in case of sodium, it is having the partially filled electron configuration, while in case of magnesium, it is having the fully filled electron configuration. ठीक है? And we know partially filled electron configuration is less stable than that of fully filled. It means removal of first electron from sodium is easier than that of magnesium. और यदि first electron removal easy है, it means less amount of energy is required. It means first energy जो है सोडियम की क्या है कम है मैग्नीशियम से, या ये कहेंगे फर्स्ट एनर्जी मैग्नीशियम की ज्यादा है. इससे सोडियम से. अब बात आती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की. When we are going to remove the second electron, then Na has been converted into the Na positive, and Mg has been converted into the Mg positive. Now check the configuration of Na positive. It is having the 1s2, 2s2, 2p6, and Mg plus gases क्या हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. अब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो Na जो है वो पहले ही Na प्लस में कन्वर्ट हो गया है. कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 है, और Mg प्लस में क्या है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. अब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी तो Na प्लस के कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 है. 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा 2p6.
and will convert into the Na+2 gases. Configuration will become 1s to 2s to 2p5. अब Mg प्लस है, जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Mg+2 गैसेस, अब कॉन्फिगरेशन बनेगी 1s to 2s to 2p6. ठीक है। अब यहां पर यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि Na प्लस गैसेस इट इज हैविंग द fully filled electron configuration, while Mg plus gases it is having the partially filled electron configuration. So the removal of second electron from fully filled is difficult than the partially filled, and therefore second ionization energy will be more in case of sodium, and second ionization energy of sodium is more than second ionization energy of magnesium. सो फर्स्ट आयनाइजेशन मैग्नीशियम की ज्यादा है, सेकंड सोडियम की ज्यादा है। तो हमें कॉन्फिगरेशन को ध्यान देना है कि हर इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के बाद कॉन्फिगरेशन क्या बन रही है, और जिस समय हमें अगला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उस समय कॉन्फिगरेशन क्या थी। यदि फुली फिल्ड है और दूसरी पार्शियल फिल्ड है तो फुली फिल्ड वालों की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी पार्शियल फिल्ड से। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आयनाइजेशन एनर्जीज, एंड दिस इज ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक। क्लियर? Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.